So in this class today we're going to see how you can apply decision tree algorithm. We have seen decision tree algorithm concept, mathematical, entropy, Gini index, information gain, probability. We all have seen that, right? Now today we're going to see how you can implement that. So to implement that, what are the things you require? You need to have a pandas, numpy, string, pandas, numpy. Obviously, you will require this library. Matplotlib when you wanted to draw any graph, and this is the important line or instruction you have to add it. What is this? See, all the algorithms that we have seen are defined in the sklearn library. Okay, sklearn is a very powerful library in which all the decision tree or means all the algorithm of machine learning they are described. Okay, we just have to import that. Okay, for example, from sklearn.ensemble import random forest classifier, from sklearn.regression import linear regression, logistic regression, from sklearn.neighbor import KNN classifier, from sklearn.kernel import support vector machine. So for all the algorithm that you have to implement it, you need to import this library. So here to implement machine learning algorithm, you are supposed to add sklearn library. It is just like a package. In Java, how do we add a package? Or in C language, in the similar way, you have to add it. So from sklearn is your folder. In that folder, tree is one subfolder. In that tree folder of package, you have to implement this decision classifier. Decision classifier is a one function inside this tree Python file inside this sklearn. Okay, are you getting what does it mean? See, sklearn is your library. Inside that Python file is your tree. You can suppose tree.py, which is for decision, where the decision tree code is written, and this import decision classifier. This is actually the function that you will going to call it here. To this function, you will going to pass the parameter while working. Now here, what is our data set? Here we are importing the data set from this URL, okay, which is the breast cancer data set. In that breast, there are different way of importing the data. Either you can download the data and read it from pd.read csv function that I've shown you, right? This like this. You can directly read it like this, or you can download the URL. From the URL also you can read it. Okay, so there are different way of that. You will first request the URL to get the content. Once you get the content, you will read those data frame from this URL. Means in this URL, you have a data set. What is the name of data set? Breast cancer, Wisconsin.data. This is your data set. Okay, in that data set, what are the columns you have? Clump thickness, cell size, uniformity, marginal addition. Are you getting? Am I clear to you? Bar nuclei, normal nuclei. These all are the different attributes that are present in on this data set. And this attribute having a column names like this, you are actually reading the data set and giving a column name to them, A1, A2, A3 like that. And class is your final target class, means your target variable, you can say, your target column. Rest are your input column. These are your input column. These are your input columns, and these are your target column. Okay, so here you are reading the data set. Now, when you read bc.shape, what is bc data is the variable which will going to read the data frame. Okay, so this variable will going to completely acquire the data set. Once you are hold the data set, now you wanted to find it out how many number of rows and columns they have. So I told you, while working with the pandas dot shape function, we use it to find out the number of rows and columns. So you can see how many columns are there. See,
sample code ID number, cell ID number, clump thickness means what is the tumor thickness, uniformity of cell size, what is the cell size, shape, or there are some more features are there with respect to cancer, tumor and all. And based on that, here I'm just saying that total 699 row I have 11 column. Now I wanted to check like in my data set what are the columns are missing. Okay, if I wanted to check for specific column, as I told you, these are the actual data, these are the actual column names. I have converted them into A1, A2, A3 because these are very long column names, right? So you have to convert them into short one so that the data set can understand. You can rename the column name also. So here I have written code A1, A2, A3, A9 class. So now it is easier. Okay, it is easier to understand. However, you will not get much more clear idea, but when the column name is reduced, it will be clear for you to understand. Okay, so like this it happens. Now, once you are done with this, you wanted to check for this AC column, what are the number of rows are missing. So when you are going to check, you will find it out that total there are 16 values are missing in that. bcdata.loc, bcdata A6 in the sense that how many missing data are there in that particular column. Okay, you can see here decision tree algorithm cart in scikit-learn. Scikit-learn, sklearn, same, has an ability to handle missing data. So here we are just checking that how much missing data. This question mark is for missing value. So how many missing value we have? In 16 rows, 11 missing value we have, almost missing value. That will be going to helpful for applying your algorithm on that. Okay. Don't go for this logistic regression algorithm because I implement this algorithm with logistic regression also. So you can ignore that. But however, you can apply decision tree here. Once you are done with this, you are going to remove all those rows which are having missing data. Okay, any column, not only A6 here, just check for A1, A2, A3 also. Wherever you will find the missing data, you just remove them or try to like replace them with some mean value, average value. Here, I will not going to do the same. I'm just removing the missing row so that I will get a row which are having the data, right? Once you will get that, you will get 683 row which are having data, like as I shown you, right? Total 16 rows, 11 column. So in that 16 rows, you have a missing data. So here, when you remove this missing value, obviously from 699, it will remain 683. Am I clear till now? Am I clear till now? Is it clear? Yes. Actually, can you please explain again that missing data part? Yes. Yeah. So here in the program, missing data equals to bc data dot log हम्म, loc. तो ये थोड़ा सा आप अंदर का बता दीजिए what does it mean? ये जो bc data dot log है ना, हाँ जी. लॉक मतलब होता है लोकेशन. मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ वे ऑफ एक्सेसिंग द वैल्यू. एक है ILOC जो कि होता है इंडेक्स. इंडेक्स के थ्रू आप कॉलम को, रो को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, जिसमें 01, 02, 03 होता है. जैसे यहाँ पे 699 रो है, तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से 698. और कॉलम का क्या होगा? 0 से 10. ये होता है ILOC. तो अगर मैं बोलूंगा BC डेटा और उसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में अगर 0 पास करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू रो, तो मैं रो को एक्सेस कर पाऊंगा. कॉलम में 0 to 10 और मेरे कॉलम के इंडेक्स हो गए. अब अगर LOC बोलता हूँ, तो LOC मतलब सिर्फ मेरा लोकेशन हो गया. मैं डिफरेंशिएट कर पाता हूँ. ऐसे शायद समझ में नहीं आ रहा.
जैसे ये हो गया, ठीक है, ये कॉलम है पी क्यू आर एस, तो इसके इंडेक्स क्या होगा, जीरो, ये रो वाइज 0 1 2, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 0 1 2 3 होना चाहिए। एक मिनट में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, डी एफ वन आई एल ओ सी 1:3 0:3, मतलब आप कोई भी रो और कॉलम को यू कैन एक्सेस थ्रू इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n-1, that is 2, and starting from 0 to n-1, that is 5, मतलब आई यहाँ पे इंडेक्स को शो करता है। तो जब आप आई एल ओ सी बोलते हो, मतलब यू आर एबल टू एक्सेस बेस्ड ऑन द index, that is 0 1 2 3. Now, what do you mean by LOC? LOC in the sense you can access based on the column name, right? Let me show you the example of that also. अभी ऐसे df2 LOC1, अभी मैंने 1 बोला, तो 1 बोला मतलब फर्स्ट कॉलम जो होगी उसको वो शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे जैसे 1 कॉलम में, जैसा कि आपके फर्स्ट रो, यहाँ पे अगर LOC बोलूँ तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो बताएं। आर यू गेटिंग, लाइक आई अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, इट मीन दैट इज फॉर इंडेक्स, और इफ आई सेड, इफ आई यूज ओनली 1 2 3, इट मीन दैट फर्स्ट रो वैल्यू, सॉरी राहुल, कैन यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ? यस गौरव, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? ओके, एक बार मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता देता हूँ। जैसे आई लॉक होगा तो इंडेक्स बेसिस पे, और वी कैन सेलेक्ट बोथ रोज एंड कॉलम्स अपने अकॉर्डिंग, बट इफ इट इज जस्ट लोकेशन LOC, then we just enter like one row name and it will return the first row, right? यस, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, और कोई एग्जांपल, एक मिनट। अगर इसमें बता देता हूँ, इसमें होगा तो वो डेटा साइंस के थ्रू आपको पिक्टोरियल वे में बताता हूँ, लाइक हाउ इट इज देयर। हाँ देखिए, अभी जैसे आपने डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के अंदर आपको एक्सेस करना है, तो अगर आपको कोई दो कॉलम एक्सेस करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 कॉलम है, वेदर, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, राइट। इफ यू वांटेड टू एलओसी, मतलब क्या होगा, किसी पर्टिकुलर रो को आपको एक्सेस करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे यू कैन गिव फ्राइडे सैटरडे, उस बेसिस पे आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। जैसे देखो, df.loc फ्राइडे टेम्परेचर, मतलब आप उस वैल्यू को दे रहे हो, ठीक है। ILOC क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू दोगे, पोजीशन दोगे। देखो, ये एक लाइन को रीड करो, LOC मतलब आप वहाँ पे लेबल पास करो, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लेबल जो होता है ना, कॉलम की नेमिंग, वो आप यहाँ पे पास करोगे। ILOC पे इंडेक्स पोजीशन पास करोगे। अगर जैसे मैं यहाँ पे मैंने LOC पे फ्राइडे टेम्परेचर पास हुआ है, ठीक है, तो फ्राइडे और टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर आपके लेबल है। वही चीज अगर मैं ILOC यूज करूंगा तो क्या होगा, ILOC के केस में वो इंडेक्स हो जाएगा। और इंडेक्स कैसे होगा, यहाँ पे अगर 0 1 2 3 4 5 6, तो 4 और 5 में पास करें, देखते हैं ILOC में क्या पास हो रहा है। 4 और 1, तो मतलब फ्राइडे और टेम्परेचर, टेम्परेचर का इंडेक्स क्या है यहाँ पे, ओके, ये 0 1 2 3, भाई 1 इंडेक्स, ठीक है। ILOC मतलब जहाँ पे आप इंडेक्स पास करें, अगर इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम। आर यू गेटिंग? यस, अब समझ में आया। बस एक बार थोड़ा नीचे करेंगे आप? ठीक है, बस यहीं पे ये जो लिखा है, ओके, रो लेवल, कॉलम लेवल एंड रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन, ओके ठीक है। अभी ये आपका रो पोजीशन है, ये आपका कॉलम पोजीशन है, मतलब फ्राइडे का टेम्परेचर वैल्यू क्या है। देखो, फ्राइडे का टेम्परेचर वैल्यू 10.51, ठीक है। सो हियर आल्सो यू आर गेटिंग द सेम। अगर सिमिलरली आपको
इंडेक्स के फॉर्म में करना है, तो कैसे करोगे? 4 आपका इंडेक्स है फ्राइडे का, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है? टेम्परेचर का इंडेक्स। टेम्परेचर का इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करोगे? ये जो है, दिस इज योर, दिस इज 0, this is 1, this is 2, this is 3. Okay, similarly it is applied here also. This is your 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. तो अभी जैसे फ्राइडे के लिए मैंने 4 पास किया, राइट? तो मुझे फ्राइडे के रिस्पेक्ट में किस कॉलम की वैल्यू चाहिए? टेम्परेचर की। टेम्परेचर का वैल्यू क्या है? 1। तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या पास कर रहे हैं, देखो 4 एंड 1, ठीक है। 4 क्या था आपका? फ्राइडे, और 1 क्या है? टेम्परेचर कॉलम। तो ये डिफरेंसेस है, मतलब ILOC पे आप इंडेक्स पास करते हो, फर्स्ट वैल्यू विल बी योर रो, ओके, नेक्स्ट वैल्यू विल बी फॉर योर कॉलम, और LOC पे आप लेबल पास करोगे कि फ्राइडे और टेम्परेचर। तो ये डिफरेंसेस है। पिक्टोरियल वे पे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा मतलब इजी होता है, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू शो यू। अब यहाँ पे अगर आप कोलन पास करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल रो कौन से कॉलम की? टेम्परेचर कॉलम। अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं करते पाइथन में, फिर क्या हुआ? ऑल रो फॉर दिस टेम्परेचर कॉलम। तो ये कैसे दिखाएगा आपको डेटा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो जितने भी इंडेक्सेस है या बोलो जितने भी रोज है, उनके टेम्परेचर कॉलम का वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये करते हो, मतलब फ्राइडे का ऑल डेटा, ठीक है, तो फ्राइडे के कौन कौन से डेटा हो गए? अभी जैसे इसमें देखो, फ्राइडे का वेदर, टेम्परेचर 2679, मतलब शॉवर 10.51 2679। तो अगर आप फ्राइडे और कोलन डालते हो, मतलब फ्राइडे के लेवल पे ऑल डेटा, ठीक है, तो फ्राइडे के लेवल में ऑल डेटा क्या हो गया? शॉवर, समझ में आया? 10.51 2679। इज इट क्लियर टू यू? अब इसमें ILOC 4 कोलन भी करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये LOC और ये, इस लिंक को स्टडी करो, ओके। आई एम शेयरिंग यू ऑन द चैट। नाउ इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज ILOC एंड LOC? Yes, now it is clear. Thank you. यहाँ पे जो LOC बोला है, मतलब मुझे BC डेटा, मतलब अपने डेटा सेट में AC लेबल है जो मेरा कॉलम का, वो मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं वो नल तो नहीं है। आई थिंक LOC एंड ILOC आई एक्सप्लेन यू व्हाइल एक्सप्लेनिंग pandas. Have you Yeah. run that code? Okay, no Yes. issue. अगर like even if you forgot about it, just have a look on this link that I share with you, and this is one of the most important question in interview. Okay. I assure you, like in your like when you give interview for Python, somebody will going to ask you. I personally faced this many time in my interview, and like almost 1.5 year before, I was failed to answer this because at that time I was not aware, because Python I started learning 2 year before, so at that time I was not much aware about it. So to you I'm saying from my personal experience that go through this because they will ask you a question on this. Okay. Now here, based on my label A6, I'm checking which is missing in A6 column. A6 is a label column name. Where is a missing value? I will going to find out those. Once I get those, I will going to remove that. So I'm here. I'm removing that. Okay. BC data में BC data का A6 कॉलम जो नल वैल्यू के बराबर नहीं है, मतलब जिसकी वैल्यू नल नहीं है, वो कौन कितनी वैल्यू है? यू कैन सी BC डेटा, जिसमें आपने डेटा फ्रेम को रीड किया है, BC data डॉट A6, मतलब उस डेटा सेट का AC कॉलम विच आर नॉट इक्वल टू मिसिंग वैल्यू। ऑब्वियसली 683 आपकी मिसिंग वैल्यू नहीं है। नाउ अब ये पार्ट चालू होता है। नाउ हियर you will going to assign to your input feature in the form of vector. What are the values? The column A1, A2, A3, A9. Almost 9 value you will going to pass as your input feature, and your output feature will be your class. Is it clear?
अभी जो आपका इनपुट फीचर है यहाँ पर वो क्या है, A1 A2 A3 A4, ये आपके इनपुट फीचर है। एंड आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट कि जो भी वैल्यू होती है डेटा फ्रेम की, वी पास इट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर और एरे। बिकॉज अभी आप खुद ही सोच लो कि एक रो में कितनी सारी वैल्यू है, तो आप वन बाय वन पास करोगे, सो हाउ मैथमेटिकल विल वर्क। इफ यू जस्ट सी दिस, okay, so what actually the algorithm means, when we pass input features, we pass value in the form of vector like this complete row will be passed as a vector, so it will be easy for the model to make a decision. उसके पास सनी होगा, ये चारों वैल्यू हो गए, ठीक है, सनी 12.2 7 9 13 30, this is one vector. Second vector will be this one, second row, you will going to pass this value as a vector. Vector means you are going to pass all the value together, so that will be helpful in decision making. अभी जैसे मैं अगर एक एक रो पास करूंगा, then it will how you are going to make a decision, right? If I give you multiple value at the same time, then it will be easy for you to make a decision, right? Am I clear? Like if I say you, based on your academic qualification, based on your current company, based on your current CTC, based on your experience, you will get a hike, or you will get a switch on the company. Means you will get a like a salary hike in the next company. So what are things that are important, right? That are deciding factor: your current package, your academic background, your skill set, and your total experience, right? So all the value if are there, then it will be easy for decision making, right? Instead of only single value, right? So in that way only, that is the reason that we pass value in the form of vector, so that it will be easy for a model to make a decision and learn. So how the learning happens? Learning is not happen one by one value. Learning happen in the form of vector. मतलब एक रो को आप पास करके ट्रेन कर रहे हो, फिर next, just like you are teaching the kid, you are making him learn 1 to 5 table, then next 5 to 10 table, then 15 to 20 table, or 11 to 15, like that step by step you are learning. So like that you train the model. So in the form of vector we pass the values. Once we do the classification, or once we decide what are my input feature and output feature, I am adding a comment only and I will share with you. It's very simple, it's not difficult. You have to just follow the step like what I followed. You need to import library, how to read a data frame. This is the next step. Third step is checking how many rows and column you have. Fourth step, how many missing value you have. Fifth step, removing the missing value. Sixth step, what will be your input feature and output feature. So here we are deciding what are my input feature column and what are my output feature column, or what are my target label, or you can say target column. ठीक है, टारगेट कॉलम मेरा यस और नो में ही होगा, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है डिसीजन ट्री, राइट? सो वेदर द कैंसर इज ट्यूमरस, और यू कैन से बिनाइन और मैलिग्नेंट, या फिर उसको भी अगर नहीं बोलते हो तो यू कैन जस्ट check it like whether it's just a sample data. You can try this to do some more complex problem domain. I'm just giving I have taken the simple example so that you can get at least idea कि कैसे इनपुट फीचर लेना है, कैसे आउटपुट लेबल लेना है, कैसे उसे स्प्लिट करना है, मिसिंग वैल्यू रिमूव करनी है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे करना है. सो जस्ट आई टुक द सिंपल एग्जांपल. Once you are done with this, next step is you will going to import your train test split. Abhi, this inside this sklearn, model selection is your Python file. Inside this sklearn package, model selection is your Python file. Inside this model selection Python file, you have a train test split function. This train test split function, they accept parameter. What are the parameter they accept? What is your input feature?
what is your target label, what is your test size. So here test size I have passed 0.349. You can pass 0.3, 0.2 also. इसका मतलब क्या होगा, 0.349 मतलब 34% मेरा टेस्ट सेट है, मतलब 66% मेरा ट्रेनिंग सेट हो गया. So normally we only pass test set, test size. So automatically by subtracting it, your algorithm will take it for a training. यहाँ पे अगर तुम 0.25 पास करोगे, it mean that 25% is your training data, sorry test data, 75% is your training data. Test size into 100 will give you 34.90 something. Okay, which mean it is it is test size. And when you subtract it from 100 minus 34.90, you will get something 65.10 something, right? That means it is your test size, training set size. So this is, you don't need to calculate this. Once you pass a test size here, automatically your algorithm will going to calculate that. Okay, once they calculate that, it will going to find it out. Now once you are done with this, ये चार किस लिए होते मालूम? I have already told you earlier. This is your train data, Yes. test data, train label, output label, जो होता है जो आउटपुट लेवल ट्रेनिंग डेटा का, और ये टेस्ट डेटा का आउटपुट लेवल. वाई मतलब योर इंडिपेंडेंट कॉलम, राइट? दिस इज योर इंडिपेंडेंट कॉलम ऑफ ट्रेनिंग डेटा. उसको आप जब इस ये जो असाइन करते हो ना, तो एक्स वैल्यू जो है आपके इनपुट फीचर है वो इसमें जाता है, वाई जो आपका है, ठीक है, वो इस किस में जाएगा, एक्स टेस्ट में. मतलब आपका जो टेस्ट डेटा है, जो कॉलम है, टारगेट कॉलम, जो टेस्ट साइज है वो इसमें जाएगी, और वाई टेस्ट में आपका remaining value assign होता है. After that, you can just print it to find it out how many your training data or Y train X test shape. So you can see that out of 683, 444L is something your test data. Okay, Y train lab shape मतलब कितने कॉलम है उसमें, ठीक है. So it is giving 444L 1L. Okay, Y मतलब एक ही इनपुट फीचर है, राइट. X test 239 is your test set, and Y test shape only one column है आपका, right? So 1L. So like this it will going to give you now your actual working. Now you will going to call that decision tree classifier, which is your algorithm. In that decision tree classifier, what criteria you are using? You are using entropy. Some people they use like a criteria, Gini index, information gain, many more things are there. We are considering entropy. Why entropy? Because they will going to tell you certainty about the event. They will going to tell you the information contained in that, and maximum depth 4. Matlab, what will be the tree size? What will be the height of the tree? Do you know how to calculate height of the tree? Yes, आपने बताया था. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जैसे जितनी बार आपका डिसीजन, आपने बोला था कि एक रो मतलब एक बार में जैसे बनाते हैं, आप बना के तो उसको ट्रिक बताता हूँ मैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ एज यू हैव दैट विल लीड टू द लीव, ठीक है, वो आपका डेप्थ होगा. अभी लाइक यू आर नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, सो दैट्स व्हाई आई कांट गो इन अ डीप, बट रिमेंबर वन थिंग कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एज दैट विल लीड टू द लीव. ओके, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो, ठीक है, अभी मैं इसका हाइट तुमको पूछूंगा, तुम ट्राई करना कितना होगा बताना. कैन यू ट्राई फॉर दिस? हाउ मच will be the depth? Height and depth both are same. It's 4. Correct. कैसे 4 हो गया? Oh, Just count the number of ages that will going to lead to the last leaf. तभी जैसे एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो जो आपके जो एक्चुअल डेटा दे आर ऑन द लीफ.
ओके, तुम जो कह रहे थे वो क्या है बताओ। आपने इसी टाइप से बताया था एग्जैक्टली, मेरे को वर्डिंग याद नहीं है, बट मेरे को आ गया है जैसे अभी कैसे ओके, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ग्रेट, गुड। सो हियर इन दैट decision tree, how many maximum number of each that will lead to the last leaf of the tree will be called as a depth. So here, how many edge is there? 1, 2, 3 or 4. It will going to lead to the last node. अभी अगर मैं इसके आगे और split करूंगा, अभी अगर मैं यहाँ split करता हूँ, तो भी आपका depth क्या होगा? 4 होगा. But why? Because it is not the last node, right? Depth means कि मतलब टॉप टू बॉटम कितना डेप्थ है, डेप्थ मतलब कितना डीप है आपका डिसीजन ट्री, मींस डेप्थ इन द सेंस that will classification you will going to do, that more detailed classification you will do. Okay, जितना इसके अंदर डीप में जाते जाओगे उतना क्लासिफिकेशन होगा. So you should not take more depth, otherwise it will lead to the overfitting, and if you take a small value then it will lead to the underfitting. So just take a normal value like 4, 5, 3, that is okay. If you take like 20, 30, then, and it depends on your data set size also. So these are the criteria you need to pass. Just think decision tree classified is a function on your tree file of your sklearn. Sklearn.tree means sklearn is a package, tree is your Python file. In that Python file you have a function. To this function you are passing two parameters. What are those parameters? Criteria for splitting the node. Here you are using entropy to split the node and make a decision in which path you should go. Entropy are used to make a split of the node, and information gain and Gini index will be responsible for uh, going to that path, means which path will lead to your classification. Depth is your final depth. Now, once you are trained it, you will going to fit that decision tree on your train data and Y train. So you are going to train on X train and Y train, matlab your input features and your output column. Okay, you can see here the shape of that input number of rows and input feature column. और यहाँ पे जो वाई ट्रेन शेप मतलब आउटपुट कॉलम में कितने रोज हो गए? 444 हो गई, एंड कॉलम कितना होगा? 1. Once you are done with this, now you can predict on X test. So when you are going to predict on X test, you are going to get the result. So अभी अब जैसे अब ये जो प्रेडिक्टरी है वो आपके रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर लिया, तो आपकी जो स्टार्टिंग के जो प्रिडिक्शन है उनको देख सकते हो. तो ऑल आर गेटिंग 2 हियर. सो मे बी कोई वैल्यूज होगा उसमें. So that values it is printing here 222, and you can check it your you can, and the actual test data की जो वैल्यू है, जो क्लासेस है उनका वैल्यू भी 22 आ रहा है. मतलब समझ रहे हो कि here the prediction that is done by you by this predicted tree for starting 0 to 4 वैल्यू, मतलब 0 से 4, मतलब स्टार्टिंग की जो 5 रो की जो वैल्यू है आपके मॉडल की वो 2 आ रही है. And when you check it on your Y test, which is your actual data, actual value, this is your actual value, are also same. It means that your accuracy is 100%. That's why it is showing the accuracy should be 1.0. When you multiply by 100, it will become 100%. This is your predicted value. So like this it works. Then you can just print confusion matrix and you can check the accuracy of that model, and like this it works. Here it is showing 94% because as you add more data on that, obviously somewhat accuracy will get fluctuate. It depends on like every time when you run it, decision tree will be depends. Okay, based on the so here there are two actually your target column. Okay, like benign is the 2. benign की जो value है, benign मतलब नॉन ट्यूमरस, मैलिग्नेंट मीन्स ट्यूमरस, तो उसका 4 वैल्यू दिया है, तो 2 और 4 के बीच क्लासिफिकेशन हो रहा है. इज इट क्लियर टू यू? वी हैव ओनली 1 minute guys. Is it clear to you or not? Yes, clear. Okay, great.
So what you can do is I will going to share this code with you. Practice this code. Today only I will share with artificial neural network video on the Trello. Run the code. Explore more from your side, so you will get an idea. So in the next class when we connect, I will going to explain KNN algorithm and support vector. Okay. Okay. And do let me ask the question. There is no questions are coming from your side in the Trello. So please ask the question where Sure. whatever you feel. Okay. Yes. इंटरव्यूज के क्वेश्चन होंगे, जो भी है पूछो, जो भी डाउट होता है. ओके ओके मेरी बात हुई थी शिवानी मैम से, शिवांगी, तो उन्होंने बोला था कि आपसे एक बार बात करेंगी वो रिगार्डिंग द डेटाबेस का जो भी सेशन है. ओके इफ शी टॉक टू मी आई विल से her. ओके ओके ठीक है. ओके ओके बाय बाय टेक केयर एंड आई विल शेयर इट बाय टुडे. ओके थैंक यू. वेलकम बाय.